children. How are you all? I hope you all are fine. Myself Kavita Krishnani. I am taking GK subject in New Era Global Kids. Now let's start with prayer. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes, relax. Now children, today I am talking about season. There are 5 different seasons in a year. How many seasons? 5 different seasons. कितनी season होती है children? 5. कितनी होती है? 5 season होती है, right? Spring, summer, rainy, autumn and winter. Okay? कितनी season होती है children? Now tell me. There are many 5 different seasons. There are many 5 different seasons. How many seasons? 5 different seasons. Spring, summer, rainy, autumn and winter. अभी कौन सा season चल रही है children? Now tell me. Which season is this? Rainy season, right? This is a winter season. During December and January, the weather is too cold. During December and January, the weather is too cold. December and January में हमें क्या लगती है? बहुत ठंडी लगती है. This season is called winter season. इस सीजन को क्या बोलते हैं हम? विंटर सीजन. विंटर सीजन में हमको क्या होता है? बहुत ठंडी लगती है. इन विंटर वी एंजॉय हॉट फूड एंड टी. विंटर में हम क्या एंजॉय करते हैं? हॉट फूड एंड टी. इट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर इन अ year, right? Then days are cold in winter season. It is very cold in winter season. We wear woolen clothes to keep us warm. हम क्या कौन से कपड़े पहनते हैं विंटर सीजन में? Now children, when do we wear cape, gloves and sweater? हम कब पहनते हैं कैप, ग्लव्स, स्वेटर, सॉक्स? Which season? In winter season. Which season do you use a blanket? Now children tell me, which season do you use a blanket? आप ब्लैंकेट कब यूज करते हो? Now fast, think fast. Yes, winter season. Very good children. Now, which is your favorite season? Children, now tell me, which is your favorite season? Now think fast. Yes, I like winter season, right? Now tell me, when do we drink hot drink and like a tea or coffee? In winter season. Children, next season is spring. I love spring the most. It lasts from February to March. कौन से मंथ में आती है स्प्रिंग सीजन चिल्ड्रन? February to March. This is the season when the tree bloom and the weather is very beautiful. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? ट्रीज ब्लूम होते हैं, नए नए लीव्स आते
में वसंत ऋतु, क्या बोला जाता है? वसंत ऋतु। ओके, दिस इज अ समर सीजन। समर सीजन, डेज आर हॉट इन समर सीजन। समर सीजन में कैसे डेज होते हैं? वेरी हॉट। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। नाउ चिल्ड्रन, हम समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कॉटन क्लोथ, जिससे हमको ज़्यादा गर्मी ना हो, और कॉटन क्लोथ हमें बॉडी के लिए अच्छा रहता है, हमको कूलिंग मिलती है, राइट, उससे। दिस इज अ समर सीजन। ड्यूरिंग विच सीजन डू वी यूज अ फैन? हम समर सीजन में क्या यूज करते हैं चिल्ड्रन? फैन, राइट। हम क्या यूज करते हैं? फैन। अप्रैल में एंड जून वेदर इज रियली हॉट ड्यूरिंग द सीजन। अप्रैल में एंड जून में हमको क्या होती है चिल्ड्रन? बहुत। नाउ चिल्ड्रन, नाउ टेल मी, व्हेन डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स? हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? इन समर सीजन। वी वेयर कैप, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड स्लीपर एंड फ्रॉक. We wear light cotton clothes. Now children, what do you like to eat and drink on hot day? आप hot day में क्या खाते और पीते हो? We like to eat ice cream and juices, right? Which season is this? It is a rainy season, right? During July, August and September, sky washes the earth. ये कौन सी सीजन चल रही है? रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? स्काई वॉशेस द अर्थ. ये हमारा अर्थ क्या हो जाता है? रेन से क्लीन हो जाता है. क्लीन हो जाता है ना चिल्ड्रन? यस. दिस इज अ रेनी सीजन. व्हिच सीजन इज दिस? रेनी सीजन. I am talking about the rainy season. The monsoon in India we call the season वर्षा ऋतु. हम इंडिया में रेनी सीजन को क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतु बोलते हैं चिल्ड्रन. ये हम रेनी सीजन को वर्षा ऋतु भी बोलते हैं, राइट. It rains heavily in the rainy season. रेनी सीजन में क्या होती है? रेन, बहुत सारी बारिश आती है. We wear raincoat and gumboots. We wear raincoat and gumboots, right? We also use umbrella in rainy season. हम रेनी सीजन में क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला. और जब बारिश आती है तो आप बाहर जाते हो तो क्या पहन के जाते हो? रेनकोट एंड गमबूट्स. ओके. नाउ चिल्ड्रन, नाउ टेल मी, व्हेन डू वी यूज एन अम्ब्रेला? हम अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? थिंक फास्ट चिल्ड्रन, थिंक फास्ट. व्हेन डू वी यूज एन अम्ब्रेला? यस, करेक्ट आंसर, रेनी सीजन. हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज करते हैं. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, what do we use on rainy day? What do we use? Raincoat and gumboots. Okay. Now children, next, which animals see in rainy season? Rainy season में आपको कौन से animals दिखाई देते हैं? You know? Now fast, think fast. Which animals see in rainy day? Yes, very good. Frog,
snail, peacock and earthworm, right? Now children, let's do some activity about season, right? This is a winter season. I have to use some birds with white color. Okay? चिल्ड्रन, आप मेरे साथ कर रहे हो? ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी? आपको भी मेरे साथ ये वाली एक्टिविटी करनी है. ओके? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट सीजन इज स्प्रिंग. You have to dip in the color and then put it here. Okay? Now summer season with green color. Now next class season. Now children, our activities are done. Now children, आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी और आपने कैसे किया है, कौन कौन सी सीजन कौन से मंथ में आती है, राइट? मैं आपको सब पूछूंगी, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा. ओके? Now children, today's our class work, page number 41 in worksheet. Page number 41 in worksheet. First you have to write CW and then date. आपको यहाँ पे class work and date mention करनी है. Today's class work is think summer will like wearing light colored clothes. हम समर वे में कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के, राइट? सर्कल द थिंग्स वी यूज ड्यूरिंग अ हॉट डे. मतलब आपको सर्कल करना है. वी लाइक टू ईट इन समर डे. वी लाइक टू वेयर. हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उस पे आपको सर्कल करना है. We wear cape in summer season. Yes, then circle, right? Then next we wear slipper. Then circle. We wear raincoat in summer season? No. We eat ice cream in summer season? Yes, I like to ice cream. We wear sunglasses in summer season. Yes, then circle it. Next, swimming costume. We use swimming costume in summer season, right? Next, shovel and bucket. Yes, play with shovel and bucket. This is our summer things, right? Now next, page number 4 to 42 in worksheet. First have you write to it class work and then mention date. आपको पहले class work and date mention करनी है. Now tell me children, which season is this? Rainy season या summer season? Yes, correct answer. This is a rainy season. What are we doing today in classwork?
During rainy season, we use many things. Circle the things we use rainy day. Which things used in rainy day? Now, what is this? This is a gumboot. Then, circle. Now, children, what is this? This is a rainbow, right? Then next, what is this? We use umbrella in rainy season. Yes, then circle, right? Now next, what is this? This is a raincoat. We wear raincoat in rainy season. Yes. Now children, our classwork is done. Now next, children, page number 43 in worksheet. First you have to write classwork and mention date. Now children, now tell me which season is this? This is a winter season. During winter season we use woolen clothes. हम winter season में कौन से clothes पहनते हैं? Woolen clothes. Circle the things see in winter season. आपको किस पे सर्कल करना है? जो हम विंटर सीजन में हमको जो दिखाई देती है उस पे आपको सर्कल करना है, राइट? दिस इज अ वुलन केप. वी वेयर वुलन केप इन विंटर सीजन. यस, राइट. देन सर्कल. नेक्स्ट, वी वेयर ग्लव्स इन winter season. Then circle it. Okay. We wear swimming costume in winter season? No. Next, muffler. We wear muffler in winter season? Yes. Then circle. Now children, now tell me what is this? This is a snowman. आप snowman देखते हो winter season में? Yes. Okay, our classwork is done. Okay, children. Now, children, today's homework, page number 4444 in worksheet. First, you have to write HW and date. आपको यहाँ पे date mention करनी है. Okay. Now match the clothes to the weather. आपको यहाँ पे 3 सीजन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करना है. ओके. नाउ चिल्ड्रन, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्लीपर. स्लीपर हम कब पहनते हैं? ये समर सीजन. देन match with summer season. Then next, raincoat. When do we wear raincoat? In which season? Rainy season. Okay. Then this is a shoes. कब पहनते हम shoes? Winter season. Then match with winter season. Then muffler. When do we wear muffler? Winter season. Then match with winter season. Next, gloves. Children, हम gloves कब पहनते हैं? Winter season. Okay. Then next, cape. When do we wear cape? Summer season. Then match the summer season. Now children, what is this? This is a woolen cape. When do we wear woolen cape? Winter season. Then next, what is this? This is a jacket. Jacket. We wear jacket in winter season. Now next, shorts. Shorts हम कब पहनते हैं? We wear shorts in summer season. Next, umbrella and gumboot.
when do we use an umbrella and when do we wear gumboots? Rainy season. Very good, children. Then next, when do we wear cotton clothes? We wear cotton clothes in summer season. Now next, skirt. When do we wear skirt? Summer season. Okay. Again recall, children. Slipper. We wear slipper in summer season. Next, raincoat. We wear raincoat in rainy season. Then shoes. Shoes. We wear shoes in winter season. And also muffler we wear in winter season. Gloves. Gloves we wear gloves in winter season. Next, cap. Cap we wear cap in summer season. Woolen cap we wear woolen cap in winter season. Then next, jacket. हम जैकेट कब पहनते हैं? We wear jacket in winter season. Then next, shorts. Shorts हम कब पहनते हैं? We wear shorts in summer season. When do we use an umbrella and when do we wear in gumboots? Rainy season. Okay. Then next, when do we wear cotton clothes? In summer season. Then next and last, skirt. We wear skirt in summer season. Now children, our homework page is done. And next video में मैं आपसे season के बारे में पूछूंगी. How many seasons and name of seasons. Okay, when do we use an umbrella? When do we wear sweater, muffler, jacket, right? And when do we wear cotton clothes? When do we use an umbrella? When do we wear gumboots and raincoat? मैं आपको ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी. Okay, children, thank you.